श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। राजोवाच न नूनं बहव आत्मारामाणां योगशमैरत ज्ञानाववर्जित कर्मबीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋचिरुवाच शक्तमुक्तं किन्विकवा एके न मनशोक्ता विश्रम्भमनव स्थानस्य षडगिराद इव शक्कज्जन्ते तदा शोक्तं न कुर्यार्कच्चित् सत्यं मनसे हि अनवस्थिते यद्विश्रम्भाचिराचीनं शस्कन्द तव ऐश्वरं नित्यं तदाधिकामस्य चित्रं तमनुयेरयक योगिन कृतमैत्रस्य भक्त्युर्जायेव पुंशदि कामो मन्युर्मतो लोप शोकमोहभयादयः कर्मबन्धच्चयन्मूल स्वीकुर्यात् को नुजद्भुतः अतैवम् अखिल लोक भाल ललामोऽपि विलक्षणैर्जडवत वधूत वेशभाषा चरितैरवलक्षित भगवत्प्रभावो योगीनां साम्बराय विधिम् अनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिगाशुरात् मन्यात्मानम् असंयवहितम् अनर्थान्ध आन्धर भावेनाट्वीक्षमान उपर धानुवृद्धिर्उपरराम तस्य ह वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमायाभाषणया देह इमां जगतिम् अभिमानाभाषेण सङ्क्रममानक गोङ्क वेङ्क कुडगान् दक्षिण कर्णाटकान्देशान् यदृच्छयो भगतक कुडगाचलो भवन आस्य कृताश्मल कबल उन्माद इव मुक्त मूर्तजोषम्भीत एव विचचार अत समीर वेगविदूत वेणुविकर्षण जादोग्र धावानलस्तत् वध नमालेलिहान सकतेन तथाक यश्च किलानुचरितम् उपाकर्ण्य गोङ्क वेङ्क कुडकानां राजर्गण्ण नाम उपशिक्षय कलावधर्म उत्कृष्यमाने भवितव्येन विमोहित स्वधर्म पथम् अकुतो भयम् अपकाय कुप्त कुबत भागण्डम् अशमञ्चषं निजमनीषया मन्द सम्प्रतश्चयिष्यते येन ह भाव कलो मनुजावशता देवमायामोहिता स्वभ विधिनियोग शौच चारिद्र विहीन देवकेलनानि अपवृतानि निज निजेच्छया गृह्णाना अस्थानाना नाचमना शौच क्लेशोलुञ्जनादीनि कलेना अधर्म बकुलेनोपगतियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ते च हि अर्वाग्दनया निजलोक यात्रयान्त परम्परया आश्वस्तास्तमस यन्ते स्वयमेव प्रबदिष्यन्ति अयमवतारो रजसो बब्लुत कैवल्य उपशिक्षणार्थक तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुव सप्तसमुद्रवद्या द्विभेषु वर्षेद्वदि पुण्यमेतत् गायन्ते यत्र यजना मुरारेः कर्माणि भद्राणि अवधारवन्ति अहोनुवंशो यशसावदात प्रियावृतो यत्र भुमान् पुराणग कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्मं यदकर्मकेतुं कोऽन्वयस्य काष्ठमपरा अनुकच्छेन् मनोरथेनाभ्यां भवश्च योगी यो योगमाया स्पृहयत्युदस्या हि अससत्तया येन कृतप्रयत्नाः इदिह स्म सकलवेदलोक देव ब्राह्मणकवां परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां संस्तत् तुश्चरिताभिकरणं परममहामङ्गलायनमितम् अनुश्रद्धयोपचितयानुशृणोत् आयाश्रावयति वावयितो भगवते तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्धते।